आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज अपने परिवार के बीच में वापस लौटी हूँ। अमित जी ने और मुग्धा जी ने मुझे अपनी सीएसआर परिवार के साथ जोड़ दिया दोबारा। मैं भी अकेले चली थी, मेरा भी कारवां बना था। नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन बिल्कुल अकेले थे। अकेले एक पुलिस ऑफिसर जो हार नहीं मान रही थी। जब पुलिस वाले नहीं थे कम तो मैं गांव वालों से पेट्रोलिंग कराती थी। तब सीएसआर लफ्ज़ नहीं था, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी अमित, तब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। तो आपने मुझे अपने रूट से दोबारा मिला दिया। सारा मेरा जीवन ही सीएसआर आधारित है। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कहानियाँ जो आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से मैंने अपने पुलिस के जीवन को सफल बनाया, इन अ वे सफल बनाया, नहीं तो मैं फेल होती हर जगह। शुरू करूँ मगर मुग्धा जी कि जब मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट दिल्ली थी, सारे गांव नजफगढ़ थे, नांगलोई नजफगढ़, जहाँ सारी बिल्डिंग्स बन चुकी। मेरे पास सारे सिर्फ 4 सिपाही थे और वहाँ पर बाहर से क्रिमिनल ट्राइब्स आती थी, औरतों को रेप करती थी, उनके सिल्वर्स के तोड़ देती थी। और मुझे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलिस, तब JN चतुर्वेदी थे पुलिस कमिश्नर, आपको कहानी मालूम है, आपको जो सीनियर हैं आप, उन्होंने मुझे जॉब इसलिए दिया DCP एक महिला होते हुए कि कोई छुट्टी चला गया था। मिस्टर रामाकृष्णन नेशनल पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग चले गए, वो DCP वेस्ट की जगह खाली थी। मैं 1980 की बात कर रही हूँ, वो खाली थी। उन्होंने कहा इस लड़की को जॉब दे दो। किरण जा डू डबल, मैं DCP हेडक्वार्टर्स थी दिल्ली पुलिस में, मुझे दे दिया। 3 महीने में जब मैंने देखा रोज़ यहाँ ये हो रहा है, तो मैं गई वहाँ गांव में, मैंने अपनी चौपाल लगाई पंचायतों की और अपने ताऊ को बोला, सब ताऊ थे, तो मैंने कहा ताऊ जी मेरे पास तो सिर्फ 4 सिपाही हैं, लेकिन मेरा ये डबल चार्ज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, आओ मिल के काम करें। बोले बेटी, उन्होंने बोला बेटी। और मुझे याद है एक कॉट पे बैठी थी मैं, तो मैंने उनको बोला मेरे 4 सिपाही हैं। बोले पहले तो आज तक कभी नहीं किसी ने बताया नहीं, आप तो बोलते थे बहुत पुलिस है, हम क्राइम को कंट्रोल कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास सिर्फ 4 सिपाही हैं जो पेट्रोलिंग के लिए बचे हैं। तो बोले बेटी क्या चाहती हो? मैंने कहा हर गांव में मैं नौजवान खड़े रात को पेट्रोलिंग में चाहती हूँ, छल्ली लेके, टॉर्च लेके और विसल लेके। मैं देखती हूँ ये कैसे आते हैं ये आपको मेरी औरतों बहनों को रेप करने और तोड़ने। तो बोले निकली। मैं कहा शर्त भी ये भी है, आप भी निकलेंगे, मैं रोज़ आऊँगी आपके पास, और आप मुझे क्या खिलाओगे? बोले हम एक गिलास दूध पिलाएंगे। तो उन दिनों चाय नहीं थी, दूध थी। सो मेरा सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से शुरू हुई। 3 महीने में वो वहाँ पर वो विसल बजले, टॉर्च बजे, मैं भी रोज़ रात को पहुँचूँ और सारा स्टाफ पहुँचा, सवाल ही नहीं उठता कोई आए। जब 3 महीने कोई रेप शेप नहीं हुआ तो JN चतुर्वेदी साहब ने बोला ये गलती नहीं की थी, ठीक हुआ था, इसी को रखो यहाँ DCP वेस्ट। तो जब रामाकृष्णन वापस आए तो उन्होंने कहा अब आपको दूसरा काम मिलेगा, ये नहीं। शुरू हुआ था सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और ये अंग्रेज़ों के टाइम से था। इसको कहते थे ठीकरी पहरा। अंग्रेज़ों की गुड प्रैक्टिस थी कि जब नाइट पेट्रोलिंग विलेजेस में दे वुड डू इट, एंड दे हैड अ चौकीदार हु हैड अ ट्रैक रिकॉर्ड कि यहाँ कौन आया, कौन गया, कौन बदमाश, कौन नहीं। दैट्स हाउ दे वर कंट्रोलिंग क्राइम। आई जस्ट डिड दैट, नथिंग एल्स। सो वहाँ पर कोई उनको कहूँ चौकीदार दो, वो सवाल ही नहीं उठता। बट यू वोंट बिलीव इट, it just finished that night crime of rapes just with those 4 constables. Then I'll take you to the Asian Games. When Asian Games happened in 1982, if many of you would remember, some of you, there was no money to promote the programs and the plans of traffic. There was no money. I was DCP traffic at that time. तो मुझे DCP कमिश्नर साहब भिंडर साहब ने कहा इतने ही लोग हैं, जो करना कर लो, यही बजट है। अब मैं सोचा ये एशियन गेम्स सारी दुनिया को जानना है, कैसे आना है स्टेडियम में, कहाँ जाना है, तो ये कैसे, कौन बताएगा? देयर इज़ नो पब्लिसिटी, देयर इज़ नो मटीरियल, देयर नो बैनर्स, देयर नो बोलार्ड्स। तो मैंने वो तब कॉरपोरेट्स को पकड़ा, कॉरपोरेट्स को प्रेजेंटेशन दी, एंड थम्स अप, द पार्लेज, द मोदी कॉन्टिनेंटल, द MRFs,
all came. And I said, look, this is traffic. I want bollards, I want banners, I want all this. Mujhe do. And you won't believe it. If you remember, there were traffic booths of that traffic helmet ka puri thi. They were all made by corporates. First time Delhi police used corporate social responsibility. लेकिन अमित 2% का benefit नहीं था. ना कोई ज़बरदस्ती थी, लेकिन ज़बरदस्ती थी, आपको जिम्मेवारी निभानी है. आपके 2% से हमारा काम बहुत हल्का करा, क्योंकि 80G. उसके बाद एशियन गेम कहाँ ख़त्म हुई. उसके बाद फिर एक और जिम्मेवारी आई. क्राइम से भरा हुआ एक एरिया था, बच्चे ड्रग्स बेचते थे. और उस वक़्त नवज्योति का जन्म हुआ, जब हमने यमुना पुश्ता में सिलाई स्कूल और स्कूल खोले. उसके बाद गांव में, चांदनी बैठी है यहाँ, फिर हमने जब गांव में देखा, गुड़गांव में देखा पानी गिरता जा रहा है, तब सैगल फाउंडेशन, आई एम सो हैप्पी दैट यू वर अवॉर्डेड सैगल ऑल्सो, दैट सैगल फाउंडेशन एंड नवज्योति इंडिया फाउंडेशन हैज़ रेज्ड द वाटर टेबल ऑफ गुड़गांव इन द विलेजेस वेयर नवज्योति हैज़ एंड सैगल हैज़ फाउंडेशंस वर्कड. And today, Navjyoti is one of the 4 recognized NGOs which has improved water table in the areas they worked. Tata Institute, Social Sciences and others have recognized this. Then comes Magsaysay Award. See, I'm a product of CSR. See, you helped me so much. I want to thank you. So when you and Mugdha invited me, I said, आपने खोया हुआ व्यक्ति जो आपका ही था, आपने अपने बीच में बुला लिया. Magsaysay Award आया. It went to, do you know, the whole prison reforms which you all remember was not a product of government funding. It was based on British manual. It had no funding for education and any reforms. The word reform doesn't exist. But when I went there, I said, मैं आई किस लिए हूँ यहाँ? मैं तो ड्राई क्लीनर बन के आई थी कि यहाँ से क्राइम करने के बाद दोबारा नहीं करेंगे. ये तो और भी बढ़ रहा है यहाँ. So we made education mandatory for 10,000 prisoners every single day. And who did it? You have Mrs. Chona sitting here. And you have many educationists sitting here who donated school books. Many of you, some of you were in education. 10,000 copy books, pencil, every day arrived. Godowns were full. And we had class 1, 2, 3, 4. हर prisoner से पूछते थे, ये नहीं पूछते थे crime करके क्या है. पूछते थे अनपढ़ है या पढ़ा हुआ है. अनपढ़, चल क्लास 1 में, ये ले तेरा क्लास 1 बैग. और उसको क्लास 1 बैग देते थे आप लोगों की डोनेशंस. सो community social responsibility. There it was not corporate. It was community social responsibility, and the rest is a story. It started with 10,000. That basically means I'm arriving at a situation where it's a zero budget support. I have an idea for you, Amit. I'll give it to you. So prison reforms is a story, and that's how Magsaysay came. Magsaysay came because of all this happening with no government funding, but community support funding. Then I'll take you to Pondicherry. I bring you up to date. When water was falling in Pondicherry, tremendously, and people were crying because the beach had disappeared. Pondicherry beach had disappeared, and water was seeping into the aquifers of Pondicherry, and it had made it saline. So there was what? Why? Because the irrigation canals were never being desilted. They were never being cleaned off so that the rain water goes in. And I love water. I just cannot do with. I have to see water. Sanitation water is also my strength and weakness. So I said, I saw the PWD budget, and I have an interesting story to tell. I went to the spot, and मेरे पास PWD वाले भी थे, सारे थे. तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी क्रॉस करते हैं एक दूसरे. कुछ एरिया से पौंडीचेरी अगर आप जाओ तो वो तमिलनाडु में है, और कुछ बाकी की पौंडीचेरी. तो वो कैनाल्स तो सारे इकट्ठे हैं. तो क्लीनिंग के लिए गए कि किसी डीसिल्टिंग करनी है, जितना पैसा चलो इसी से करते हैं, करें तो सही. तो वो मुझे PWD का जूनियर इंजीनियर कहता है, मैडम दिस इज़ नॉट आवर रोल, आवर jurisdiction. I said, whose jurisdiction? Ma'am, this is Tamil Nadu jurisdiction. They are supposed to desilt this irrigation canal. So I said, ठीक है, let's get them all over. We got them all over. उनके सामने वो जब उसने कहा कि ये हमारी jurisdiction नहीं है, तो वो एक लेडी थी जूनियर इंजीनियर, वो कहती, no ma'am, it is your jurisdiction. See, it is written that when in between two territories, one canal goes common, it is yours where you are present. So
उसको दिखाया और जूनियर इंजीनियर ने मुझे झूठ बोल के गुमराह कर रहा था. Now said, where's the money? So I said, money. He said, ma'am, I have only this much money. एक वहाँ contractor था. I said, how much will it cost? He said, ma'am, it will be only 4 lakhs if I clear this up. So I said, 4 lakhs? What's the problem? He said, but ma'am, मैं काम नहीं करूँगा. The contractor said, मैं नहीं करूँगा. Why? क्योंकि ये पैसे नहीं देते PWD वाले. They keep the bills. पिछले bills भी नहीं दिए. So ये नहीं, इनका नहीं करूँगा. I said, मैं दूँगी तुम्हें. करोगे clean? हाँ बोलो करूँगा. तो मेरे पास वो एक कंपनी वाले खड़े थे जो पानी को यूज़ कर रहे थे, कॉल्ड आइनॉक्स कंपनी. आई टोल्ड दैट आइनॉक्स मैनेजर, यू आर यूजिंग पब्लिक वाटर, व्हाई डोंट यू कंट्रीब्यूट एंड कॉम्पनसेट फॉर मी एंड यू पे द कॉन्ट्रैक्टर, आई डोंट नीड योर मनी, यू पे द कॉन्ट्रैक्टर एंड द डीसिल्टिंग विल हैपन. ही सेड, यस मैम, आई विल डू इट. आप मुझे अलाउ करो, परमिट, हम तो हमेशा चाहते हैं, यू प्लीज़ परमिट मी. सो आई एम ब्रिंग यू टू Pondicherry. I have left Pondicherry, 6 meters high water table. All the irrigation canals have been water recharged. That's the story. And I ended up with the final one of President's message. President of India came to address Puducherry university convocation. And that could be the national movement taken up by Amit and you. And that's called Charity Nation, you can take it up, is he said, you should all incorporate university social responsibility. Because in sanitation, if I had 60,000 young men and women in Puducherry, why could they not be involved in Swachh Bharat? Why could they not be? They could have adopted villages, lanes, resident welfare associations, villages, why not? I tried my level best, but there were people who wanted to break this. I think president's call of university social responsibility, और उसको भी आप social national slogan नहीं बनाए, that's not acceptable. So I think that's another area to be picked up, which basically means all vice chancellors, simple, all vice chancellors of India, which is all of them, and they're all under governors, and they're all under President of India, they're all under Vice President of India. They just have to mandate it. हर vice chancellor की एनुअल परफॉर्मेंस में आना चाहिए आपका हर स्टूडेंट ने क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया. एंड 2 things they can 100% do. 3 things. 1, water harvesting, they can associate. Sanitation, they can associate. Teach the younger person, elder to a younger, they can associate. What's your problem? Give and work with the NGOs as interns. What's your problem? Why can't the vice chancellor and plant a tree on your birthdays? If every Indian youth, that's my message, Amit, for you. We need to take this up. Every family, on your birthdays, on your anniversaries, on memorable days, plant a tree. Find a place to plant a tree, but you must plant. That means India every year could plant 1 billion trees without any money. Any money. Why can't we do this? So I would think, this is what my message is. So you've called me. Actually, you reconnected me with my causes and my family. Let me conclude by saying where I read in the Times of India today. It just happened to be so relevant to say. It says,